Today we are going to shoot lecture third of the series called Book Review on the book named Clash of Civilization. We have with us Arif sir. थैंक यू सोहेब साहब। ये अभी हमारा लेक्चर तीसरा है और जो हमारे तीसरे लेक्चर में इनफैक्ट तीसरा चैप्टर है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का टाइटल जो है वो यूनिवर्सल सिविलाइजेशन विद क्वेश्चन मार्क है और आगे लिखा है मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन। तो आज हमारा लेक्चर इसी पे कवर होगा। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के इस चैप्टर में एक डिबेट होगा पहले मॉडर्नाइजेशन पे और साथ ही में इसका इम्पैक्ट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी और व्हाट वर द रीजंस दैट सोसाइटीज वर डिक्लेयर्ड टू बी बिकमिंग मॉडर्न। और लेटर ऑन वेस्टर्नाइजेशन पे एक डिस्कोर्स होगा और मॉडर्नाइजेशन वर्सेस वेस्टर्नाइजेशन का एक कंसेप्ट उस पर एक एनालिसिस किया जाएगा। फिर रेस्पॉन्स टू दिस इंटेंस मॉडर्नाइजेशन और इंटेंस वेस्टर्नाइजेशन का कैसे आएगा, कोई रिजेक्शनिज्म करेगा, कोई कैमलिज्म अल्फाज इस्तेमाल किया गया वो हम बताएंगे क्या है, और कोई रिफॉर्मिज्म के जरिए इसको रेस्पॉन्ड करेगा। तो हम बिगिन करते हैं। सबसे पहले देखिए सर, यूनिवर्सल सिविलाइजेशन है क्या? क्या हम यूनिवर्सली सिविलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं? हंटिंगटन बिल्डिंग करता है अपनी इस बुक के इस रिव्यू में, थ्योरी करता है और इनफैक्ट वीएस नाइपॉल को कोट करता है। वो बोलता है कि सर्च ऑफ यूनिवर्सल सिविलाइजेशन जो है वो हमारे समाज में आज के दौर में ज्यादा रेलेवेंट है। देखिए सोएब साहब, वहां पर एक कंसेप्ट बिल्डअप किया जा रहा है कि देयर आर सम कॉमन गुड्स डिस्पाइट डिफरेंट कल्चर्स, डिस्पाइट डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट ट्राइब्स, diversity of the world is there, but still there are some common goods where people can have agreement. There are some common bads where people can collectively dislike. Murder is collectively disliked, rape is collectively disliked, most of in the way. Similarly, there are some common goods. Justice is collectively liked, rule of law is collectively liked, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन को कलेक्टिवली लाइक किया जाता है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि दीज वैल्यूज कैन बी ए फाउंडिंग स्टोन्स ऑफ डेवलपिंग और बिल्डिंग अ सो कॉल्ड यूनिवर्सल सिविलाइजेशन वेयर इंस्टीट्यूशंस, structures and associations or non-associations can combine together to give a kind of a kind of discourse. And civil society organizations do have impact on the society, states, nation states, where they can go for universal civilization. Then the other aspect of universal civilization is that there must be universal barbarians. कुछ तो फिर मतलब, because this is clash of civilization, I told you who we are is important, only what we are not. So there are some universal barbarians also, those who have the primitive societies, the feudal societies, the societies where any discourse was not welcomed, which was not liked, Shoaib Saab, they have been declared as universal barbarian people, barbarian cultures, barbarian civilizations. And those who, the societies who were advancing towards modernization, they have the responsibility to modernize those societies also who were not taking pace with the time. So that is how the imperialism is also justified if you analyze it correctively. Okay sir, so here now he is also quoting Hadley Bull. हेडली बुल के साथ सर एक और आथर था जिसका नाम डब्ल्यू रुस्तो था, जिसने स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लिखी थी। मॉडर्नाइजेशन थीसिस में हंटिंगटन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इस किताब के अलावा, इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन किताब के अलावा, हंटिंगटन ने एक और किताब लिखी है, वेव्स ऑफ डेमोक्रेसीज। और उन वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी में उसने मॉडर्नाइजेशन थीसिस को एक्सप्लेन किया है, लेंथ में, एट लेंथ में एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हेडली बुल है, मार्टिन कैपलन है, आर्नल्ड टॉर्नबी है, जिन्होंने वन वे और द अदर वे मॉडर्नाइजेशन और विज वेस्टर्नाइजेशन पे बात की है।
अभी क्यों मॉडर्नाइजेशन बनी आगे सर? देखिए, एक मॉडर्नाइजेशन एक फेज ऑफ हिस्ट्री भी है। अगर हम सादा अल्फाजों में देखें, एंशंट, मेडिवल, ट्रांजिशन एंड मॉडर्न, ये हमारे पास एक हिस्टोरिकल एराज आते हैं कि सर? अगर एंशंट से पहले भी देखें, प्री हिस्टोरिक एरा भी रह चुका है, स्टोन एज, नियोलिथिक एज, पेलोलिथिक एज, समथिंग लाइक दैट। लेकिन यहां हम कंसर्न करते हैं मॉडर्न से एज ए स्टेज ऑफ हिस्ट्री आल्सो। ठीक है सर? और यहां पर बात की जा रही है, वो मॉडर्नाइजेशन एक रात में नहीं आई। समाज में, दुनिया में कुछ तो गड़बड़ थी, जिसको डार्क एज भी कही गई। कल हमने थोड़ा सा उस पर एनालाइज किया। डार्क एज वाज डार्क, इट वाज dark in terms of literature, it was dark in terms of knowledge, it was dark in terms of ethics, it was dark in terms of culture, it was dark in terms of philosophy, it was dark in terms of anthropology, it was dark in terms of simple intelligentsia. Okay sir? So why that to come out of the dark age, we have almost 250 years transition to peaceful transition. So that what is the sources? सर रिफॉर्मेशन आया, एक मूवमेंट है, बड़ा मूवमेंट है हिस्ट्री का सर। रिनाइसेंस आया, रिनाइसेंस एक जर्मन टर्म है, या जर्मन टर्म है, आई थिंक लैटिन, इट्स अ जर्मन टर्म विच मींस रिबर्थ ऑफ एवरीथिंग, रिबर्थ। रेनाइसेंस के साथ रिवाइवलिज्म आया कि वट एवर वॉज गुड इन द क्लासिकल एरा, एंशिएंट ग्रीक की बात करते हैं जो मेडिवल से पहले था, उसको रिवाइव करो, वो आया। एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आया। डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स सर बिकम वेरी इंपॉर्टेंट because so far people were so much confined to their continents. And look, traveling is the biggest source of intellectual, to develop your cerebral capacity, to develop into intellectual dimension को बढ़ाने के लिए एक्सप्लोरेशन की जरूरत है। एज ऑफ एडवेंचरस एज आ गई सर। कोलंबस दौड़ते दौड़ते अमेरिका गया, वास्को डी गामा ने किश्ती उठाई तो पहुंच गए इंडिया। फ्रांसिस बर्नार्ड, समथिंग लाइक दैट, वो वहीं बगदाद चला गया। तो ये तमाम मुख्तलिफ कल्चर्स को पढ़ने का एक मुहिम भी स्टार्ट हुआ सर। तो एज ऑफ डिस्कवरी, कार्टोग्राफी में जो रेवोल्यूशन आया, जो मैप्स बनाए गए सर, मैप्स और प्रिंटिंग प्रेस, इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया मॉडर्नाइजेशन लाने में। मैप्स के जरिए आपको पहली बार, और बाद में कार्टोग्राफिक मैप्स भी बने। कार्टोग्राफिक मैप्स फर्स्ट वर डेवलप्ड इन द बाइजेंटाइन एम्पायर। कार्टोग्राफिक मैप सर कैसे होते हैं कि देखिए सर, आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है किसी भी एरिया की या किसी भी लैंड की, थोड़ा लैंड से अलावा हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं इस वक्त, किसी भी एरिया की ऑन इट्स एक्सेस, कि इसका ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है। इट इज जियो पोलिटिकल, जियो कल्चरल ऑल्सो इन इट्स नेचर। तो पहले अगस्टस एक रूलर था जो बाइजेंटाइन एम्पायर का बादशाह था, उसने कार्टोग्राफिक मैप्स बनाए थे जासूसों के लिए। बाद में मॉडर्नाइजेशन में भी इसका बड़ा जबरदस्त रोल रहा सर। उसके बाद जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आया था सर, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, जिसने मॉडर्नाइजेशन की पीक पे पहुंचा दिया। नेवी की डेवलपमेंट सर, तो ये तमाम चीजें वन वे और द अदर वे मॉडर्नाइजेशन की तरफ गई, जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलाया, जिसने लिटरेसी फैलाई। और यहां पर हंटिंगटन कहता है कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो मार्क कर रहा है सर लैंग्वेज को। बहुत ही जबरदस्त तरीके से लैंग्वेज को उसने हाईलाइट करके लिखा है कि लैंग्वेज प्ले द मोर वाइटल रोल इन द पेस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और किस हिसाब से वो लैंग्वेज को कह रहा है? देखिए, लैंग्वेज क्या है सर? लैंग्वेज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं सर, पार्ट ऑफ कल्चर, more than that, part of civilization, more than that, agency of power, more than that, a tool of domination, more than that, a tool of control. ये तमाम चीजें हंटिंगटन लिखता है इस पेयर्स में लैंग्वेज। और जब क्लेम करता है कोई ग्लोबल लैंग्वेज, आज इंग्लिश कर रही है गेम, उसने 6 लैंग्वेजेस का जिक्र किया है सर। अरेबिक्स, which once time was the language of power, language of knowledge, language of civilization, language of culture. उसके बाद सर स्पेनिश, which was the language of power, language of knowledge, language of culture, language of domination. उसके बाद सर मैंडेरियन की बात करता है, which was the language of power, language of knowledge, language of power, domination. एंड उस वक्त आज के दौर की बात लैंग्वेज इंग्लिश। आज देख लीजिए सर, अगर कॉमन सेंस हम देखें, द पर्सन हु स्पीकिंग इंग्लिश, वेदर दे नो थिंग्स आर नॉट, दे आर कंसिडर्ड इंटेलिजेंट।
isn't it? This is called, cultural imperialism. But yes, language play a vital important role, and the birth of vernacular languages, vernacular knowledge. Okay, sir. ये जो लैंग्वेजेस का बड़ा जबरदस्त रोल रहा, और टेक्स्ट रहा। लैंग्वेज एक टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता था। अगर हम यहां पर हिंदुस्तान में एक मिसाल देखें, जब फारसी लैंग्वेज थी, बिकॉज हुक्मरान फारसी थे, तो लैंग्वेज ऑफ पावर पर्शियन था। तो हमारे राम मोहन राय को भी जबरदस्त मौलवी का तखल्लुस दिया गया था। ही वाज ए प्रोलिफिक अरेबिक एंड पर्शियन टीचर था। वो बहुत जानता था ये चीजें। उसके बाद सर जो बड़ी जबरदस्त बात इसने की, इसमें रिलीजन, रिलीजन को देखो, जो हेजमून होगा ना, देखो रिलीजन मींस वर्ल्ड रिलीजन, बिकॉज ये टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल सिविलाइजेशन। और वर्ल्ड रिलीजन इस किताब के हिसाब से क्रिश्चियनिटी, रेशनलाइज वे में बताने की बात की जा रही है कि देखिए, हम प्रोस्टलाइज रिलीजन की तो बात करता है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडानिज्म, प्रोस्टलाइज रिलीजन और नॉन प्रोस्टलाइज रिलीजन में हंटिंगटन लिखता है, देखिए वेस्टर्न क्रिश्चियंस हैं, जो रिलीजन मेन करता है बात, वेस्टर्न क्रिश्चियंस, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, रशियंस, मुस्लिम्स, नॉन रिलीजियस, हिंदूज, बुद्धिस्ट, चाइनीज फॉक, ट्राइबल्स एंड एथीस्ट। These are major religions. Okay, sir. और इसमें सर इस्लाम पे भी लिखता है how it developed in the desert and it claimed a recognition at the global level. Later on, it was a part of civilization. Religion play an important role in disseminating the Islamic civilization, isn't it? There is no denying of the fact. Similarly, जो रोमन एम्पायर थी सर, रोमन एम्पायर के दो फेज हैं सर। एडवर्ड गिब्बन्स की किताब से अगर हम रिलाई करते हैं, तो वन वाज वेस्टर्न रोमन एम्पायर, और वो जब खत्म हो गई 323-400 एडी के दरमियान, उसके बाद डेथ ऑफ द फर्स्ट रोम कहा गया। तो इसे कहा था बर्थ ऑफ सेकंड रोम वाज बाइजेंटाइन एम्पायर, और बाइजेंटीनियन एम्पायर वाज द होली रोमन एम्पायर। Byzantine Empire was Holy Roman Empire, and they accepted Christianity as its official religion. Initially, Roman Empire was godless. So after that, after Roman Empire accepted Christianity as an official religion, it linked with its civilizational assets. Okay, sir. Who can deny the Aryan civilization without the recognition of Brahmanical religion? No one can deny. So religion had been one aspect of civilizational tool to bring modernization in the cultures in the world. Okay, sir. Then he is talking about very important. Modernization involves industrialization, simple, urbanization, increased level of literacy, education, wealth, social mobility. Parochial identities will be replaced by achieved identities. Birth-based loyalties and ties will be replaced by content-based, understandings. That was the project of modernization. That look, actually, modernization was a state of mind. That you will go a mobility from your ascribed identities to the achieved identities in toto. So, because we are in a debate with the westernization, it has been confused with westernization. First, we must cover the modernization aspect of it, then we'll cover to the westernization aspect of it. Now he is talking about the Catholicism and Protestantism. There is no denying of the fact that the Protestant जो religion within Christianity आया, it paved the way for modernization. Even so many other authors also said, there is a book, I am not reminding this time the name of that author. He is saying that the origin of capitalism can be traced in the work of Protestants. प्रोटेस्टेंट सर आए थे क्रिश्चियनिटी के विदिन, एक फिरका बना था, मार्टिन लूथर इसका फाउंडर था। ये किंग नहीं, वो पहले वाला मार्टिन लूथर। उसने एक मूवमेंट उठाई थी कैथोलिक्स के खिलाफ। कैथोलिक्स में मसला क्या था सर? कैथोलिक्स में, कैसे मैंने जो बताया, क्रिश्चियनडम जब आगे बढ़ा, डार्क एज से ऊपर बढ़ा, सब एक मतलब पॉपरी काफी आगे बढ़ी, तो कलर्जी के पास कंट्रोल रहा रिलीजन का। ठीक है सर। उसके बाद एक बंदा आया, इसका नाम मार्टिन लूथर था। उसने एक क्वेश्चन किया, सेल ऑफ इंडल्जेंस, एक किस्म का पैसा लेता था चर्च कि यार तुम लोग पैसा दो। और वहां पर एक मूवी भी है सर हॉलीवुड की, एंजल्स एंड डेमन्स, जिसमें दिखाया है कि चर्च कितना मतलब टेरराइजिंग इन अपीयरेंस था। सेल ऑफ इंडल्जेंस, जिस तरह आज कुछ लोग मजहब के नाम पे पैसा लेते हैं, खाते हैं, अपना पेट भरते हैं, इट वाज अ काइंड ऑफ रिलीजियस एक्सप्लॉइटेशन। तो उसने कहा कि काहे तुम पैसा लेते हो, गॉड को तो जरूरत नहीं है पैसे की।
सेल ऑफ इंटेलिजेंस की जस्टिफिकेशन थी कि देखो, गिव अ मनी टू पोप एंड यू बुक ए टिकट इन जन्नत। यस, एंड ये चैलेंज किया था मार्टिन लूथर ने। फिर basis was, why should I give money? Later on the movement didn't stop there, the agitation didn't stop there। ये बढ़ते 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 पहुंचा गया कि बाहर reaching God, why should I go through the medium of Pope? I can directly read the Holy Bible, Old Testament, New Testament। There must be no intermediary between a believer and the creator and created। So they get it and they play। And you know that sir, फ्रांस में सर कुछ मूवमेंट्स, इंटरनल मूवमेंट्स थे, जिसमें रूसो से पहले मैजनी ने बड़ा जबरदस्त रोल अदा किया था प्रोटेस्टेंटिज्म को बढ़ाने के लिए। और फिर होल ऑफ द वेस्टर्न यूरोप टर्न टुवर्ड्स प्रोटेस्टेंटिज्म। बिकॉज क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल ही समझाया था, वहां चर्च स्टेट की लड़ाई भी थी। सर बात समझने की है, एक तरफ चर्च स्टेट की लड़ाई है, स्टेट को दबाया गया है, बादशाहों को बर्फों में लटाकर माफिया मंगवाई जा रही है, तो बाबी बादशाह डरे हुए हैं। प्रोटेस्टेंटिज्म में उन मजलूम बादशाहों को भी एक उम्मीद की नजर आ गई, और वो तमाम वो जो चाणक्य नीति होती है सर, एनिमीज एनिमीज फ्रेंड, फिर वो भी उनके साथ में आ गए चर्च के खिलाफ। उसके साथ साथ सर कैपिटलिस्ट, जिसको कार्ल मार्क्स बुर्जुआ कहता है, बुर्जुआज क्लास कहता है, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, वो भी इनके साथ आ गए। ऐसी बात नहीं कि उनमें आपस में दोस्ती थी सर, वो भी आ गए, क्योंकि उनके कमर्शियल ट्रेड पे भी वो चाहते थे इन्वेस्टमेंट करना। वो कैपिटलिस्ट लोग थे, लेकिन रिलीजन इतना इंस्टीट्यूशनल था, इतना डोमिनेटिंग था, उन पे भी बैन लगा गए थे कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा बनाने का हक सिर्फ मेरा है। तो क्लास ऑफ कैपिटलिस्ट, क्लास ऑफ रूलर्स एंड प्रोटेस्टेंट्स कंबाइंड टुगेदर एंड ब्रॉट डाउन द चर्च। और जब चर्च नीचे आ गया तो फिर सेपरेशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल अथॉरिटी, जिसको बाद में नाम दिया गया सेकुलरिज्म का, ये आया गया। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। जो सर सेकुलर और स्पिरिचुअल, जो मैंने कहा रूह बदन की बात कही थी, जो टू वर्ड थ्योरी के कंटेक्स्ट में कभी इधर तो कभी उधर जा रहा था, अब एक ही बार गया और ये कहा सीजर इज गॉड, इन ऑर्थोडॉक्सी गॉड इज डेड। आ गए ना सर, आप ऐसे बंदे आ गए नेटशे जैसे, जिसने कहा गॉड इज डेड, इंडिविजुअल हैव रिप्लेस्ड गॉड्स। एंड फिर आ गया पब्लिक प्राइवेट डिवीजन ऑफ मोरालिटी। पब्लिक, you are a citizen, you are a human being; privately you may be Hindu, Muslim, Sikh, Christian, whatever। So religion should be the private and personal affair of human beings, and publicly you must be treated under temporal authorities, under secular laws and other this worldly rules, rule of law। Go hell with the divine law। Simple is that divine law or so-called God-made laws, we don't care for them as per this thesis I'm talking about। Rule of law will be replaced, rule of law will be impersonal, they will be man-made laws। एंड उसके बाद सर देखिए क्या बात करते हैं कि जी ये सोशल प्लुरलिज्म की बात आ गई मॉडर्नाइजेशन में, कि देखिए अगर समाज फेडरल है, अथॉरिटी भी फेडरल होनी चाहिए। अगर समाज में डाइवर्सिटी है तो अथॉरिटी भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। अगर समाज में मल्टीकल्चरल्स है तो अथॉरिटी में भी मल्टीकल्चरलिज्म दिखना चाहिए। उसके बाद आई बात कि देखिए अब कब तक बादशाहों के रहमो करम पर रहेंगे सर, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज भी लाइए। मैग्ना कार्टा 1215 में हुआ सर। किंग जॉन की कौन था जिसने 1215 में पहली बार कुछ बंदों को हक दिया, तो बोला गया कि मैग्ना कार्टा, ट्रीटी ऑफ मैग्ना कार्टा। उसके बाद बड़े मूवमेंट्स उठे, पार्लियामेंट बनाने गए, ग्लोरियस रेवोल्यूशन सर इंग्लैंड में आ गया, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई गई और सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट वाज रेस्टोर्ड। देन यू नो सर, अमेरिकन रेवोल्यूशन, वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट men are created equal by nature and they have been given some God given rights of equality, liberty and pursuit of happiness। Sir, the whole thesis of Thomas Jefferson, the whole thesis of Madison papers, Federalist papers, they all were written just for giving representation, just for giving recognition to the representative bodies। Even the slogan of American independence was no taxation without representation। Then French Revolution came and they brought a revolution on the name of a people। So equality, liberty and fraternity of the people were the slogans। So these all give importance to the representative bodies and pave the way for modernization। Okay sir, then it is talk about individualism। I am free,
My existence is not determined by anyone in this world other than me. I am the best interpreter of myself. I owe nothing to religion. I owe nothing to family. I owe nothing to culture. I owe nothing to society. I am what I am. This is what modernism stands for. So these were all the doctrines of modernization. But you know that because this phase of modernization was first witnessed in Western Europe. Okay, so that's it was by coincidence that this modernization would have been identified with westernization, and people were thinking because they are important because it is because of their culture, because of their western culture. So people began to begin to believe that even Sir Said Ahmad Khan in India, for example, मिसाल दे रहा हूं, उसने भी बोला वेलकम इंग्लिश पीपुल. राममोहन राय ने कहा why the holy his majesty government want us to read Sanskrit. Are they interested us to to live in the old ages, learn English. इसने कहा सर अहमद खान ने, भैया कितना मदरसा पढ़ोगे, भैया इंग्लिश पढ़ो और आगे चलो. So this was how the responses in the non-Western societies to this modernization was given. The response was people began to question their own cultures. Rather than they should have gone towards modernization by protecting their cultures, they didn't do that. They just welcomed them, they just mimic them. It was mimicry of the or making, they were just following them in all access. Okay, sir. तो उन्होंने क्या किया, दे ट्राई टू क्वेश्चन देयर आइडियाज, दे ट्राई टू क्वेश्चन देयर ड्रेस कोड्स, दे बिगन टू लव. फॉर एग्जांपल टुडेस कंटेस्ट देयर आर सम पर्सन्स, I have no other term but that term I call them popcorn persons. Yeah, McDonaldization of the world, hybridization of the world, Coca-Colonization of the world have occurred because of the implication of the soft power of intensive westernization. Westernization should have been different than modernization. The different cultures could have gone for the project of modernization rather than by protecting their cultures, but they question their cultures. The Hollywood, rather than people most like Hollywood is considered craze. Tie, coat, pant is called symbolic ego, but dhoti is being considered a sharam ki baat hai. Coca-Cola is called brand, and all these things, CNN, World, and these are all the part of soft power, and they try to promote what Rudyard Kipling said: white man's burden. That it is the burden of ours to civilize the uncivilized and barbarian people. And these various the colonizers, initially starting from France, Japan, Spanish, English, Mandarin, even initially to Ottomans, they were colonizers. Later on, they don't remain that much. Germany in the initial phase, they all try, and later on, post World War One, post World War Two, Americans, Russians, and in the post Cold War era, Americans in the unilateral, unipolar world politics. So all they try to imbibe. Modern culture is nothing but Western culture. You can have no other option than to come out of Western culture. You can't become modern without becoming Western. Okay, sir. So there was a response to this modernization or to this westernization. There are three types of responses. One was, it is by natural. आप समझिएगा इस बात को. एक response आ गया सीधे rejectionism. We don't welcome you. We don't like you. We hate you. You polluted our religion. You polluted our culture. Look, what was the stand taken by Swami Dayanand Saraswati? Go back to the Vedas. Just मिसाल दे रहा हूं. राममोहन राय ने बोला था वेलकम क्रिश्चियंस, वेलकम इंग्लिश. उसने बोला गो बैक टू द वेदास. उसने कहा कि हमें जरूरत नहीं है वैसे सीखने की. द होल अलीगढ़ मूवमेंट के खिलाफ देवबंद मूवमेंट उठा, बोला कि काहे उधर जाना है, अपना देखो. तो पहला रेस्पॉन्स था इंटेंस रिजेक्शनिज्म टू दिस इंटेंसिव वेस्टर्नाइजेशन अंडर द गर्ब ऑफ मॉडर्नाइजेशन. एंड सेकंड वाज केमलिज्म, KEMALISM. उसको दूसरा टर्म हंटिंगटन कहता है और टॉइनबी को कोट करता है that a second possible response to the West is Toynbee's
हीरोडेनिज्म इस्तेमाल करता है, मतलब हम एम्ब्रेस करेंगे, हमें लड़ना नहीं है क्या वेस्टर्नाइजेशन है क्या मॉडर्नाइजेशन है, हमें कोई डिस्टिंक्शन की जरूरत नहीं है, हम सीधे पकड़ेंगे दोनों को और अपने कल्चरों को खत्म करके अगर अपने आप को बचाना है इस वक्त दोनों पकड़ो, वेस्टर्नाइजेशन भी पकड़ो और मॉडर्नाइजेशन भी पकड़ो। पेज 73 में थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट स्टैंजा मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा जो इसने यहां पर लिखा है विद रेस्पेक्ट टू explicit reference to Islamic world. To escape anomicity, Muslims have but one choice. For modernization requires westernization. Islam does not offer an alternative to modernize. Secularism cannot be avoided. Modern science and technology require an absorption of the thought process which accompany them. So too with political institutions. Because content must be emulated no less than form. समझ रहे हैं आप क्वेश्चन? The predominance of Western civilization must be acknowledged so as to be able to learn from it. European languages, European literature, European movies, Western educational institutions cannot be avoided anymore. So this was written in 1993, the response of Kemalism. But if you look at 60 years before these words were written, Mustafa Kemal Ataturk, page 74, Mustafa Kemal Ataturk has come to similar conclusions and has created a new Turkey out of the ruins of the Ottoman Empire, the book mentioned. And he launched a massive effort both to westernize Turkey, secularize Turkey, and to modernize Turkey, and to build up a society which was completely Western and completely modern. Okay, sir. Third response to this intensive westernization, modernization was reformism. Look, neither we completely reject you nor we completely accept you. We will analyze you, we will protect our own culture, whatever is rational left in our own culture, we will protect that also, and whatever will be good in you, we will follow that also. So this concludes the third chapter and the responses towards the intensive modernization and westernization, and by way of reformism, Kemalism, and rejectionism. And then in conclusion, it was again said that Islam and modernization do not because the reformist approach, Islam and modernization do not clash. Pious Muslims can cultivate the sciences, work efficiently in factories, or utilize advanced weapons. Modernization requires no one political ideology or set up institutions or elections, national boundaries, civic associations, or other hallmarks of Western life are not necessary to economic growth. So it was what say that midway between intense rejectionism and intense acceptanism. And this concludes our third chapter. And the part first of the whole book is complete. Now we'll begin with the fourth chapter tomorrow in another lecture, and the part second of the book is shifting balances of civilizations.